Good evening, everyone. We are waiting for the people to join, Okay. and we'll start our webinar in a few minutes. It's okay. You can start. It's 6:07, so 6:37. I hope you all are having a great evening. Ma'am, we are live, so you can start the webinar. You can start. Oh, Yeah. okay. Namaste and good evening, everyone. Welcome to our webinar Jago breast cancer को पहचानो breast cancer prevention signs symptoms and guide to self examination. मेरा नाम चार्मी पंड्या है. मैं रिलीफ फ्रॉम कैंसर इंडिया और प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ. और हमारे साथ आज यूएसए से हमारे फाउंडर जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर संदीप जरीवाला. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन की शुरुआत 2017 में सूरत में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी. हम ज़रूरतमंद अडल्ट और पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स और उनके परिवारों को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट करते थे, जिसमें उनको निदान, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, पैलेटिव केयर जैसी सहायता करते हैं. साथ ही में हम उनको रहने के लिए, जो पेशेंट्स दूर से आते हैं उनको रहने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन की मदद भी करते हैं. इसके लिए हमने कैन किड्स किड स्कैन, जो कि समग्र भारत में पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है, उनके साथ पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स के लिए यूएसए स्थित रिलीफ फ्रॉम कैंसर के साथ अडल्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए पेलियमेंटरी केयर के लिए और नव्या डॉट केयर के साथ सेकंड ओपिनियन के लिए पार्टनरशिप की है. हमारी संस्था की शुरुआत से लेकर आज तक हमने 3,800 अडल्ट कैंसर पेशेंट्स और 347 पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट किया है. जैसा कि हम जानते हैं, स्तन कैंसर जागरूकता महीना अक्टूबर महीना है. रिलीफ फ्रॉम कैंसर इंडिया और पीजेएमएफ ने ये वेबिनार का आयोजन किया है ताकि ये समझा जा सके कि स्तन कैंसर के लक्षण और क्या-क्या है. आप घर पर खुद ही जांच कैसे कर सकते हैं, और यदि आप किसी भी लक्षण को देखते हैं तो डॉक्टर का संपर्क कैसे कर सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसका इलाज क्या है. हम इस बात को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि शीघ्र निदान यानी कि अर्ली डायग्नोसिस जीवन बचा सकता है. इसलिए हम आप सभी को आपकी आसपास की सभी महिलाओं के बीच ये मैसेज फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं. यदि आप या आपके आसपास की सभी महिलाओं जिसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, तो आपको साल में एक बार मैमोग्राम टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. हमें लगता है कि इस महीने में हमें हमारी माताओं, बहनों, बेटियों और पत्नियों को गिफ्ट में मैमोग्राम टेस्ट देना चाहिए. Because what better gift than health and safety for our loved one. आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7202016200, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.pjmfcare.org पर जा सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं. मैं कमेंट बॉक्स में डोनेशन लिंक शेयर कर रही हूँ. प्लीज स्प्रेड द वर्ड, और आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के लिए फंड रेज करने में हमारी मदद कर सकते हैं. आज के वेबिनार का आयोजन इसरोली में आरएनजीपीटी कॉलेज के साथ रहकर किया गया है. आज हमारे साथ प्रोफेसर विवेक जोशी जुड़े हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आरएनजीपीआईटी कॉलेज से. इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र चौधरी भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने एमटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम एसवीएनआईटी सूरत इन 2010 डिस्टिंक्शन, और वो हाल में पीएचडी परस्यूइंग कर रही है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से.
She is working as an assistant professor in the Computer Science and Engineering Department at RNGPIT since 2010. आज हमारे साथ डॉक्टर मिशेल शाह जुड़े हैं, जो पीपी मानिया हॉस्पिटल सूरत में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के हेड हैं। उन्होंने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस किया है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने जयपुर के भगवान महावीर हॉस्पिटल में डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी किया है। डॉक्टर मिशेल को ऑन्कोलॉजी में 10 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा कैंसर सर्जरी की है। Thank you so much, Dr. Mishra, for joining us today and sharing your knowledge and experience about breast cancer with our viewers. Viewers, यदि आपके कोई भी प्रश्न या कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। हम वेबिनार के अंत में उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास और भी प्रश्न हैं तो आप हमें फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। Over to you, Dr. Mishra. Thank you. Thank you. Madam, if you can start the presentation on your screen. Okay, I'm sharing it. Can you see presentation? No. Yes. Okay. I think it's okay, fine. The presentation is okay. So, first of all, thank you to Priyanka Jariwala Foundation and Relief from Cancer for doing this very important awareness initiative wherein breast cancer awareness, that is the need of the day. And breast cancer, the aware about breast cancer, and if at all they are suffering from breast cancer, what they can do, which will help in early detection and therefore in proper treatment of the breast cancer. So, you could go to the next slide. So, gradually, India is becoming cancer hub of the world, unfortunately. There is a very, very high incidence of cancer in India. Already, India is globally number one in cervical cancer, that is गर्भाशय का मुख का cancer, gallbladder, पित्ताशय का cancer, oral cancer, मुंह के सारे cancer and pharynx, गले के cancer. So these four, गर्भाशय का मुख, पित्ताशय, मुंह का कैंसर और गले का कैंसर, इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है इन 4 कैंसर में और बाकी सब कैंसर भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि भाई कैंसर के कारण क्या है, ये कैंसर क्यों होता है और किस किस में होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेस और कैंसर के बहुत सारे कारण उसमें से मेन कारण जो है, और आज अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो जेनेटिक है। ब्रेस्ट स्तन का कैंसर, अंडकोश का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ये सब जो स्त्रियों के कैंसर है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स काफी आते हैं। दूसरा डाइटरी फैक्टर्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स आते हैं उसमें, और बाकी दूसरे सब कैंसर्स है उसमें एडिक्शंस, पर्सनल हाइजीन और अप टू 25% ऑफ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हमको कारण पता नहीं है कि क्यों हुआ है। दैट इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अप टू 25% कैंसर्स में ऐसा कोई क्लियर का कारण नहीं होता, बट उनको कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट। कैंसर क्रिटिकल इलनेस में आता है, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर हार्ट की इलनेस, लंग डिजीजेस, लिवर डिजीजेस और किडनी डिजीजेस और कैंसर।
कैंसर एक क्रिटिकल इलनेस में है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है और उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है जो कैंसर ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होता है और कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से जो बर्डन है और जो इश्यूज है वो भी काफी ज्यादा होते हैं तो cancer is one of the critical illnesses and that is why we have to pay attention and we have to be more aware about cancer. Next. So इंडिया में कौन कौन से कैंसर्स कॉमन है मेन में अलग विमेन में अलग विमेन में अर्बन और रूरल में डिफरेंस है एक्चुअली अगर देखने जाए तो सर्विक्स कैंसर यानी गर्भाशय का मुख का कैंसर दैट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग फीमेल्स इन इंडिया सेकेंड इज ब्रेस्ट कैंसर स्तन का कैंसर बट इसमें भी रूरल और अर्बन में डिफरेंस है जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है और जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए गर्भाशय का मुख का कैंसर ज्यादा कॉमन है दूसरे कॉमन कैंसर अंडकोश का कैंसर गर्भाशय का कैंसर थायराइड का कैंसर मुंह के कैंसर ये सब स्त्रियों में ज्यादा होते हैं नेक्स्ट अब स्तन कैंसर के बारे में बात करते हैं तो स्तन कैंसर अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाए तो हर 4 मिनट में एक इंडियन वुमन को ब्रेस्ट कैंसर स्तन कैंसर डायग्नोज होता है अबाउट 1.38 मिलियन न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस एवरी ईयर आते हैं एंड आई फील दिस नंबर इज वेरी लेस और अनरिपोर्टेड बिकॉज इंडिया में अपने पास कोई नेशनल कैंसर डेटाबेस नहीं है जो सारे रिपोर्टेड कैंसर्स या सारे डायग्नोज कैंसर वो सिस्टम में आए जो हॉस्पिटल्स करते हैं उनके स्टैटिस्टिक्स जाते हैं और उनके स्टैटिस्टिक्स ये नंबर्स बोलते हैं बट आई फील द एक्चुअल नंबर वुड बी मच मोर देन दिस अनफॉर्चुनेटली वन women dies of breast cancer every 13 minutes in India so that is also a very sad statistic for us next something about other statistics worldwide you can say that every 1 in 8 women will develop breast cancer in India the figure is 1 in 28 women so compared to worldwide the incidence of breast cancer in women is less in India compared to worldwide less common but it is still the first or second most common cancer among the women in India of all the cancers that develop in women, about 27% of these will be breast cancer. 50 to 60% of women diagnosed with breast cancer in India die within a year. So 50 से 60% स्त्रियों जिनको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस आता है वो एक साल में उनकी मृत्यु हो जाती है एंड दिस इज वेरी सैड फॉर अस और इसका कारण एक ही है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस नहीं है जब तक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं तो उनकी बीमारी ऑलरेडी बढ़ रही होती है थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंच गई होती है तो उस स्टेज में फिर उनका रिजल्ट डाउन जाता है अगर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हो अगर स्त्रियों को पता हो कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी डिटेक्शन करना है क्या टेस्ट करना है मैमोग्राफी कब करना है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना है तो उनका डायग्नोसिस फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हो सकता है और फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हम लोग ऑलमोस्ट 5 ईयर सर्वाइवल 100% होता है ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली कोई भी कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल 100% हम लोग नहीं बोल सकते बट ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ दोज कैंसर्स जिसमें हमारे पास इतनी सारी एडवांस ट्रीटमेंट है इतनी एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज है कि हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं द ओनली थिंग इज कि वो टाइम पे अर्ली स्टेज में डायग्नोज होना चाहिए और पकड़ में आना चाहिए तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स और इंडिया के स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो 40% of breast cancers diagnosed in India are in stage 3 and stage 4 whereas this number is less than 20% in western countries and over there first and second stage cancers are more common and one of the main reasons is that they have a national screening program so in western countries mammographic screening
is compulsory for all women above 40 years of age. It is compulsory. It is part of the national health guidelines. There is a systematic program. All females after 40 years of age will get a yearly mammogram done. Unfortunately, in India, we don't have a national screening program, and that is because of the population, and it is logistically it is very difficult. So what we have in India is opportunistic screening. Opportunistic screening is that whenever a female, कोई स्त्री डॉक्टर के संपर्क में आती है, घर में कोई डॉक्टर है, घर में कोई रिलेटिव है जो उनको एडवाइस देता है, तब वो जाके मैमोग्राम कराती है, तब वो जाके स्क्रीनिंग कराती है. बट ऐसा कोई डायरेक्ट, जैसे कि बच्चों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस फिक्स की है, सब बच्चों को वो वैक्सीनेशन लगता ही है. ऐसा कोई मैमोग्राफी या ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का इंडिया में कोई ऐसा प्रोग्राम या गाइडलाइंस नहीं है. नेक्स्ट. अगेन द सेम, इफ यू, अगर हम लोग देखते हैं तो यूएस, इंडिया और चाइना, दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर केसेस. ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी, जैसा मैंने कहा, रेट्स इन इंडिया आर 1.7 times higher than the maternal mortality rate also. So if you think about the government programs, we have got so many programs to decrease the maternal mortality rate, right? But do we have any program which helps in increasing the breast cancer mortality? So that is the need of the hour, because breast cancer mortality is almost 1.7 times higher than in maternal mortality. And breast cancer, as I said, accounts for almost 14% of cancers in Indian women. Next. So what are the risk factors? क्या चीजें ऐसी है जो अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है? So सबसे पहला रिस्क फैक्टर है उम्र, एज. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. 55 इयर्स, 60 इयर्स प्लस में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है. जेंडर, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और फीमेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है. फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज 100 times मोर कॉमन देन मेल ब्रेस्ट कैंसर. फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जेनेटिक कंपोनेंट ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है. अप टू 25% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी जेनेटिक वारसागत में होते हैं, फैमिली हिस्ट्री से होता है. फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, मदर है, सिस्टर है, आंटी है, जिनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, देन आपका रिस्क, जो लेडीज है उनका रिस्क ट्वाइस हो जाता है नॉर्मल से. सो अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव who has had a family history of breast cancer will have twice the risk of developing breast cancer. The average woman's lifetime risk is 12. Genetics, as I said, BRCA1, BRCA2 mutations, काफी सारे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. सबसे कॉमन वन BRCA1, BRCA2 जीन है जिसमें मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर होता है. दूसरे भी बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिसका जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग होता है, उसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है. फिर कुछ चीजें अपने में, जैसे कि हाई ब्रेस्ट डेंसिटी. सो women with less fatty tissue and more glandular tissue are at higher risk for developing breast cancer. Obesity, जिनको मोटापा है उन्होंने एस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा होते हैं और बिकॉज ऑफ इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल्स उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है. Alcohol use has definitely been linked to breast cancer. Increased alcohol use is associated with developing breast cancer. Next. Other risk factors, age, genes, family history मैंने आपको बता दिया. Other risk factors में रेडिएशन एक्सपोजर, कभी कभी बचपन में कोई ट्रीटमेंट के लिए अपने को रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. ओबेसिटी और अल्कोहल मैंने बता दिया. जेंडर, पर्सनल हिस्ट्री, जिन लेडीज को एक बाजू में स्तन कैंसर हुआ है उनको दूसरे बाजू के स्तन में ब्रेस्ट कैंसर होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है. फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हार्मोन की वजह से होते हैं, जो बॉडी में जो हार्मोन्स की, स्त्रियों में जो हार्मोन्स की चेंजेस आती है उनकी वजह से जो रिस्क बढ़ता है. तो उसमें रिस्क फैक्टर्स में आएगा अर्ली एज ऑफ मेनार्की, यानी पहली बार जब पीरियड्स आए वो बहुत कम उम्र में आ गए. लेट मेनोपॉज, यानी जब पीरियड्स बंद हुए वो काफी लेट उम्र में बंद हुए. तो
उसकी वजह से जो हार्मोन्स का और ईस्ट्रोजन का जो बॉडी में एक्सपोजर का पीरियड होता है नंबर ऑफ इयर्स में, वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा बहुत लेट हुआ है, 30 इयर्स 35 इयर्स के बाद हुआ है, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा रहेगा। या फिर कभी बच्चा हुआ ही नहीं है, प्रेग्नेंट कभी हुए ही नहीं हो, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर कोई हार्मोन थेरेपी की टैबलेट्स चल रही है, ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स चल रही है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट। Sir, wait for the second. I think ma'am has Yes. left the meeting. Just I think wait there for is some 1 or problem. 2 seconds. Yes, sir. Ma'am, share your screen again. Yeah, I guess there was some internet issue. Yeah. Is my screen visible? Not yet. Yes, now it is visible. I think it has gone away again. Ma'am, share it again. Yeah. Is it visible? No. Yes, It is ma'am. starting. Yes. Yeah. Okay. Okay. Let me go on to the next slide. So, what factors affect breast cancer risk? जो जिन चीजों से रिस्क बढ़ता है वो मैं आपको बताया कि अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, वजन ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठा जीवन है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, रेडिएशन लिया है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है और हार्मोन थेरेपी है। इसके ऑपोजिट में किस चीज से अपना रिस्क कम होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल डिक्रीज योर रिस्क? तो अगर हम लोग हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज 3 to 4 hours a week करते हैं, 1 or more full-term pregnancies, as early the pregnancy so better. So if a first full-term pregnancy before the age of 25, this will have a significant protective effect. Breastfeeding, this has been proven by numerous studies that if you do breastfeeding for 12 to 15 months, so it is protective against breast cancer. अगर breastfeeding करते हैं तो वो breast cancer से protection मिलता है. And menopause before the age of 50, 50 साल से पहले अगर मेनोपॉज हो गया है तो ओवरऑल ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बॉडी में कम होगा, वंस अगेन वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डिक्रीज करेगा. So all the factors which increase and decrease: early menopause, maintaining a healthy body weight, regular exercise, full-term pregnancies, and breastfeeding, most important. That is why you should encourage breastfeeding, not only for the child's nutrition for mother, but also to decrease your risk of breast cancer. Next slide. So once again, the same thing as I said, having a child at a young age, reducing alcohol, avoiding hormone replacement therapy or oral contraception, reducing weight, and the important factor which was missed in the previous slide is having regular breast cancer screening from the age of 40 plus. This is also known to decrease your risk. Next. Okay, so this is about the risk factors. Now we'll talk about the symptoms. How will you know that there is some problem? How will you know that there is something wrong and कुछ problem है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चिन्ह होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? अगर आपको आपके ब्रेस्ट में कोई भी जगह कुछ गिठार लगती है, कुछ लगता है कि कुछ चमड़ी कड़क हो गई है या कुछ उसमें चेंज लग रहा है, अगर उसमें कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में या निपल में दर्द हो रहा है, अगर ऊपर के स्किन जो ब्रेस्ट की स्किन है उसका कुछ चेंजेस है, नॉर्मल टेक्सचर चेंज हो गया है, सराउंडिंग जो दूसरी स्किन है ऑपोजिट ब्रेस्ट की स्किन है और सेम ब्रेस्ट की स्किन में कुछ डिफरेंस लग रहा है, अगर निपल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है यानी कोई सफेद पानी आ रहा है या खून निकल रहा है, अगर निपल में कोई चेंजेस है, निपल अंदर चली गई है, निपल बैठ गई है, अगर कुछ बगल में गांठ लग रही है,
अगर कुछ चमड़ी अंदर खिंच गई लगती है, अगर कुछ चमड़ी पूरी लाल हो गई है, या पूरे ब्रेस्ट में सूजन हो गई है, तो ये सब चेंजेस है ब्रेस्ट में, जो लेडीज अपने आप बहुत इजीली इसको समझ पाएगी और इजीली ये सब चेंजेस रिकॉग्नाइज कर पाएगी। तो ये सब चिन्ह है। अगर आपको इसमें से कोई चिन्ह है तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, बट अगर ऐसा कोई आपको चिन्ह दिखता है, ऐसा कुछ सिम्टम्स है, तो जरूर आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई इसमें कुछ जरूरी हो तो कोई टेस्ट करे या देख ले या कोई दवाई करे। हर एक ऐसा चेंज या हर एक ऐसा सिम्टम कैंसर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये सब वार्निंग साइंस है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, once again similar thing, different diagram. So symptoms, nipple discharge, अगर कुछ गिठान है, lump thickening, skin irritation, armpit pain. Next, uh, same thing, area of thickened tissue in the breast, change in the size. अगर breast की दोनों breast की comparison में कोई एक breast की size change हो रही है या shape change हो रहा है, that is also important. Redness, rash, pain in the armpits, discharge. Next. ओके, सो ये सब वार्निंग साइंस थे, सिम्टम्स थे। अगर इसमें से कुछ होता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके सिवाय, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सब कुछ है, तो फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें आता है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग ये होता है कि भाई जिन लेडीज को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों में भी हम लोग एक सर्टेन एज के बाद टेस्ट चालू करते हैं। उस टेस्ट का कारण एक ही होता है कि अगर आगे जाके उसमें कुछ कैंसर बनने वाला हो या कैंसर का कोई रिस्क हो, तो वो कैंसर एकदम शुरुआत में पकड़ में आ जाए और उसका हम लोग सही से इलाज कर सके, वो पूरा ठीक हो जाए। So cancer screening is the test or examination performed on an asymptomatic individual, and it is a secondary prevention method. Next, कैंसर स्क्रीनिंग का लक्ष्य क्या है? टू डिटेक्ट एसिम्टोमेटिक पोटेंशियली क्योरेबल डिजीज, यानी कैंसर की ऐसी गिठान पकड़ने की जिसकी वजह से स्त्रियों को कोई तकलीफ नहीं है, उनके ध्यान में नहीं आया है कि ऐसी कोई गिठान मुझे है, कि ऐसी कोई मुझे स्तन में तकलीफ है, और वो टेस्ट से पकड़ आ जाता है। तो जनरली फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेज से भी कम जो प्री कैंसरस स्टेज होते हैं, वो डिजीजेस स्क्रीनिंग से पकड़ में आ जाते हैं, और वो डिजीजेस 100% क्योरेबल होते हैं। अगर थोड़ा कैंसर उसमें आगे बढ़ भी गया है तो भी नॉर्मली जब लेडीज के ध्यान में आएगा और वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पहले हम लोग स्क्रीनिंग से पकड़ सकते हैं। और जितना जल्दी वो पकड़ में आएगा, जितना अर्ली वो डिटेक्ट होगा, उतना अपने को रिजल्ट बेटर मिलेगा, उतना ट्रीटमेंट भी कम लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मॉर्बिडिटी होती है, कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, कीमोथेरेपी आती है, रेडिएशन आती है, जिनके खुद के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जितना अर्ली स्टेज होगा उतना कम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, रेडिएशन शायद ना आए, कीमोथेरेपी भी कम आए, तो उतना ट्रीटमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो पेशेंट पे कम होंगे। और ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई 40 to 50% मोर्टेलिटी है, वो सब मोर्टेलिटी भी इसमें कम हो जाएगी। नेक्स्ट, आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट, वो इट शुड बी इजीली परफॉर्म, जैसे मैमोग्राफी होता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, सब जगह हो सकता है, इनएक्सपेंसिव है, और बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसमें अगर कुछ भी चेंज हो तो वो तुरंत से कैंसर पकड़ सकता है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग के 2-3 डिसएडवांटेज है जो भी सबको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा परफेक्ट कैंसर है ऐसा नहीं, बट कुछ डाउटफुल एरिया दिखता है, जिसकी वजह से जब आपको डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं कि मैमोग्राफी में कुछ आया है, तो आपको चिंता, एंजाइटी होती है, और उसके आगे जाके रिपोर्ट करते हैं तो उसमें नकली कैंसर नहीं निकलता है, बट थोड़ा बहुत एंजाइटी और अननेसेसरी आगे प्रोसीजर उसमें होता है,
बट वो फायदे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर वो सच्ची में है तो वो पकड़ में आ जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा रेयरली, मेमोग्राफी, एमआरआई, ये सब टेस्ट अभी बहुत अच्छे हो गए, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भाई कैंसर है और इसमें पकड़ में ना आए, बट इट इज वेरी लेस नाउअडेज विद एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के 4-5 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आज थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है पेशेंट और द लेडीज देमसेल्व्स। वो लोग अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अच्छे से करते हैं, उनसे ज्यादा उनके ब्रेस्ट के बारे में कोई नहीं जान सकता। उनको जैसे ही कोई चेंज या कुछ उसमें डिफरेंस पता चलता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास आ सकते हैं, और इस तरह से वो डॉक्टर को कुछ भी चेंज हो तो वो जल्दी कंसल्ट करके उनका स्क्रीनिंग हो जाए। So breast self examination is the best. Second is clinical breast examination. Clinical breast examination is ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जो नॉर्मली लेडीज खुद करती है, वो ये डॉक्टर के पास करवाते हैं, डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस या कुछ फाइंडिंग पकड़ में आती है तो उस हिसाब से आगे उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। थर्ड, मैमोग्राफी, जो सबसे कॉमन है, उसमें एक्सरे मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी दोनों चीज आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन ही करते हैं कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दोनों साथ में ही करते हैं। सो मैमोग्राफी इज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। लास्ट इज एमआरआई। एमआरआई सब पेशेंट में नहीं करते हैं। हाई रिस्क वुमेन है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, वो मैं आगे बताऊंगा, उन लोगों में ब्रेस्ट एमआरआई स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो स्त्रियों को खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना होता है। जैसे कि आपको ये स्लाइड्स में दिख रहा है कि स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, और अपने हैंड्स को पहले उसमें इंस्पेक्शन होता है कि आप स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में अपने ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करिए। तो उसमें आप देखिए कि कोई चेंज लग रहा है, कोई शेप में चेंज है, ब्रेस्ट का लेवल ऊपर नीचे है, या कोई गिठान कैसा कुछ लग रहा है, या स्किन में कोई चेंज लग रहा है। दूसरा, आपके ऑपोजिट हैंड से ब्रेस्ट को पाल्पेट करना होता है। उसमें देखना होता है, सर्कुलर मोशन से पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है। सर्कुलर मोशन, अप एंड डाउन मोशन दोनों से, कि भाई उसमें कुछ चेंजेस है नहीं है, कोई हार्डनेस है, कोई गिठान महसूस हो रही है, कहीं कुछ बगल में गांठ लग रही है कि नहीं, इस तरह से पूरा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना। नेक्स्ट, सेम थिंग, आप मिरर के सामने खड़े रहो, पहले अपने हाथ ऊपर करो, फिर हाथ साइड में करो, फिर हाथ नीचे करो, और फिर एंगल से देखो, तो आपको पूरा ब्रेस्ट चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा कि इसमें कोई चेंजेस है कि नहीं है। फिर अपने पाम्स ऑफ दी फिंगर्स, हाथ के आगे के पार्ट से आप पूरा ब्रेस्ट को स्टैंडिंग और खड़े हुए और सोते हुए आप पूरे ब्रेस्ट को आप पाल्पेट करो। जो भी कुछ चेंजेस लगे, कुछ डिफरेंस लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, so this is in detail about how the breast self-examination is conducted, is how it is to be done. यदि उसमें चेंज हो स्टेप वाइज तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। नेक्स्ट, सो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, कौन सी एज पे और कौन सी एज पे क्या क्या करना चाहिए। सो 20 to 40 years of एज में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया, अभी आपको दिखाया, वो आपको खुद करना है। 2-3 साल में कभी भी आप अगर ब्रेस्ट डॉक्टर के पास से भी अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकते हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 1 to 3 years, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन दिस एज ग्रुप। More than 40 years of age, annual clinical breast examination and screening mammography is to be done, or digital mammography, ultrasound mammography, whichever is feasible.
more than 40 years of age every year. Mammograms will detect a lesion in many cases 2 years before the lesion is evident by clinical breast examination. So only clinical breast examination is not enough. You should also do a mammography. Yearly screening for all patients. Next. So the previous recommendations were there for women at normal risk, who have got no family history or nothing. For those women who are at increased risk, उनका स्क्रीनिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे 5 years earlier, 35 years पे every 6 to 12 months and awareness. Those who have a strong family history जिसमें risk more than 20% है, तो उसमें थोड़ा और जल्दी चालू करेंगे स्क्रीनिंग एट 30 years. Same thing, annual mammography, clinical breast examination every 6 to 12 months. जिनका फैमिली हिस्ट्री में BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2 जीन म्यूटेशन है, फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव है और वो खुद भी ये जिनके कैरियर है, उनमें स्क्रीनिंग हम लोग 25 years पे चालू करेंगे. Clinical breast examination every 6 to 12 months. Annual mammograms and breast MRI can be used as an adjunct to this treatment. Next. So this is the picture of a mammogram. This is the mammography machine, and this is how the mammogram is done. And this is the film which we get in the mammogram, and it will help us in detecting the cancer or other changes in the breast. Next. A mammogram report, in short, just for knowledge, mammogram में categories लिखी आती है. 0, 1, 2, 3 is nothing to worry about. 4, 5 या 6 आता है तो वो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना होता है. जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए 0, 1, 2, 3 लिखा हो वो वायरस उसमें तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल ही है. 4, 5, 6 है तो आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए. नेक्स्ट. मैमोग्राम के बाद क्या? सो फॉर every 1,000 women who have a screening mammogram, about 100 women will have some finding and will need a second scan after that. 61 will have, out of those 61 will have a second finding normal. 20 will have a benign finding, जिसमें कुछ डर की बात नहीं है, and they can be followed up. 19 will need a biopsy. A lesion will be found in them, and out of those 19 biopsies, 5 will be diagnosed with breast cancer. So this is the whole this thing, and this is in a nutshell the entire benefit of a screening mammography. Right? Out of 1,000 women, you might find cancer in 5 of them. In these 5 patients, we would have saved their lives because found early, we will be able to cure that patient. Next. So, besides routine mammography, the other advances would be a digital mammography, in which sensitivity and specificity increases. So nowadays, most of the centers do a digital mammography. We hardly do the conventional X-ray mammography anywhere. Another modality is the 3D mammography or the tomosynthesis mammography, in which the technology of a CT scan and a mammography is combined, increases the sensitivity and specificity. And last is MRI. It is only used in high-risk women. Next. The screening MRI, as I said, MRI is a newer modality, not to be used in routine women, only in those who have high risk, that is a strong family history and genetic mutation present, BRCA1, BRCA2. Those patients you can use an MRI for screening. The reason for not using it routinely in all patients is because many times you will have a lot of false positive findings in screening MRI, and unnecessary the patient will have anxiety. Unnecessary you will go in for further procedures for an average risk person. These procedures are justified in a person who is at high risk, but not in an average risk person. Next. So MRI only in BRCA mutation, untested first degree relative of BRCA mutation, and those people who have a lifetime risk of breast cancer more than 20 to 25%. Next. So this is in short picture about the how a breast MRI is done and basic. So
these few points, I conclude two or three things. First of all, the signs and symptoms of breast cancer, then screening and investigations of breast cancer. And shortly, I'll just outline the treatment of breast cancer in a nutshell. Uh, if your mammogram or MRI or ultrasound finds a suspicious lesion or finds there is some problem, कुछ तकलीफ है, next step would be a biopsy. Biopsy is a small amount of tissue from the cancer is taken and sent to the pathology lab for diagnosis. And once the biopsy is done and a diagnosis is there, then the next part comes staging. How much is the cancer? कैंसर कितना है, कौन से स्टेज में है? तो वो स्टेज के लिए अपने सीटी स्कैन, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सभी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और स्टेज वाइज अलग अलग ट्रीटमेंट आता है. जनरली ब्रेस्ट कैंसर में 4 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी. स्टेज वाइज इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं कि भी सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस में, और कौन सा पहले कौन सा बाद में. शुरुआत है तो पहले सर्जरी करते हैं, बाद में जरूरत हो तो कीमोथेरेपी देते हैं. अगर थोड़ा बीमारी बढ़ गया है, तीसरे स्टेज में आ गया है, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के बाद फिर रेडियोथेरेपी और वो करते हैं. जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं ट्रीटमेंट में स्टेज वाइज. नेक्स्ट, आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. Thank you, Dr. Michel, for the presentation, very detailed. I have a couple of questions. So, in the beginning, you mentioned that the cases of breast cancer are more in urban areas compared to rural areas. Is that true? Yes, it is true. Okay. The probable reason for that is because of the lifestyle factor associated with breast cancer. See, breast cancer is a very important part is lifestyle, that is obesity, diet, exercise, and all those are risk factors, plus the use of hormone therapy and oral contraceptives. Because of all these reasons, urban areas do have a higher incidence than rural areas. Okay, so yeah, that was my observation, and that's very important to point out that lifestyle factors in urban areas are quite different, especially things like obesity you mentioned, maybe working professionals that may not be breastfeeding as much as in rural areas and things like that. So those are definitely preventive factors that are easy to accomplish if there is more awareness about these factors. Yes. So thank you for that. Also, as far as mammograms go, you said the incidence, the occurrence of breast cancer is 5 in a sample of 1,000, or in 1,000 cases of mammograms, at least 5 of them are found to have breast cancer. So that seems to be a very, that seems to be a high ratio. So this is So why that I is think five cancers over the lifetime of screening. Over the lifetime of screening, yeah. So that definitely is a very good tool to detect breast cancer early. Yes. And you mentioned that you could detect breast cancer earlier by almost 2 years in a mammogram compared to clinical examination. Yes, that is the main advantage of a screening mammogram. Because many a times, till the lesion becomes palpable, you will not find it by a clinical examination. And the mammogram will pick up the early changes, the microcalcification, other changes much earlier. And in fact, most screening mammogram detected breast cancer are usually in the pre-invasive or the stage 1 breast cancer. Right, and you may also mention that if detected, most of them, if detected early, within 1 year they can be cured, or at least if detected a year before, the chances of survival are very high. So Very given high. that, given that mammograms can detect something possible 2 years in advance, if somebody was detected to have anything 2 years in advance from mammogram, the chances of survival are very high for those people then. Right. This is why I think the mammograms seem to be more effective
as a tool, and obviously cost wise also, um, other than other expensive testing. And coming to testing, so as far as for BRCA 1 and 2, is I'm assuming genetic testing is the only way to detect that in advance, right? Yes. So Somebody has it. if you have a strong family history, or if the breast cancer in a particular patient occurs at a younger age, right? Generally, these genetic breast cancers, if this is the first case in the family and there is no strong family history, but the breast cancer has come at less than 40 years of age, then we have a high index of suspicion that this might be the index case for a genetic mutation. And we test that particular patient and we might find a mutation in one of the genes. So then her family members will get tested for that particular gene. Okay, so especially for example, her siblings or her children or um, Right. any blood relatives. Okay. So is BRCA testing done in all cases of breast cancer or only when you suspect that it was due to the mutation? Or how can you tell that it was So due to the mutation? see, it is not done in all cases. Generally, if you have a strong family history, if you have a family history of multiple cancers like breast, ovarian, colon, uterus, and prostate. So these five come in syndromes together. So if you have a strong family history of these five cancers, if your breast cancer occurs at less than 40 years of age, then in those patients we would go for a genetic testing. Okay. So family history dictates genetic testing, and how are patients able to get genetic testing? I'm assuming it's through an oncologist, but what is involved in getting that? What is the cost of genetic testing? Obviously, the first step in before doing genetic testing is we have to involve a genetic counselor. That is mandatory Okay. because they need to be counseled regarding what the test is and what the outcomes of the test are. Not necessarily every genetic mutation leads to cancer, and not necessarily every genetic mutation detected will have some therapeutic implications for that patient. So those things a genetic counselor explains, and then we go forward for the genetic testing. Nowadays, almost all the standard labs have started the genetic testing for breast cancer, and the cost has come down drastically. Uh, there are some tests which encompass all 50, 60 genes which are there with breast cancer. Those might be a little expensive, but if we go for selected tests, if we go for particular BRCA1, BRCA2 testing, or select a few 510 tests, and the cost is pretty nominal, not very expensive as before. Okay. So it is widely available now in testing centers. Yes, yes. Okay. You have some questions, Charmi? Yeah. First of all, thank you so much, Dr. Mishra, for the very informative webinar. So I have a few questions. Like, can you please share something about nutrition and healthy habits to prevent breast cancer? Like about something about food habits? Okay, see, related to breast cancer or in general related to all cancers, the important thing is to have a healthy lifestyle, right? Obesity, fast food, processed food, all these things are all contributing factors. So, in general, not just for breast cancer, but for all the other cancers also, all the GI cancers and all. If you have a healthy lifestyle, if you do moderate amount of exercise, if you are not overweight, not obese, and if you don't eat too much fatty food or processed food, then all of these will be contributing factors to decreasing your risk of cancer. Okay, thank you. My next question is how important is a second opinion and how we can get it? See, cancer diagnosis is like very emotional and very traumatic experience for a patient, right? And even the cancer treatment is pretty difficult. It's not a very easy treatment, or there are a lot of components of the treatment and that. So many a times a second opinion will help in reinforcing the first opinion. That is what my experience is.
Generally, what happens is when you're consulting an oncologist, when you're consulting a qualified oncologist, most of the time everyone follows the guidelines. So the variance in the treatment or the plan of treatment would be very minimal. Something about a few variations might be there for personal choice. Otherwise, most of the time the treatment follows the same. But if a patient gets a second opinion and the same treatment is suggested to the patient, then the confidence and the compliance of the patient for that treatment increases. So therein lies the importance of a second opinion. I Okay. just wanted to add here, I agree with Dr. Michel that the goal of getting a second opinion ideally should be that the first opinion was the correct opinion, which gives assurance to the patient. And so we actually provide second opinions through Navia Tech in partnership with Tata Memorial Hospital, and wanted to let the viewers know that if you are below the poverty line, it is completely free. If you have financial difficulties in getting a second opinion, we are able to assist patients with that. But our partnership with Navia helps us a lot to give people assurance, or like Dr. Michel said, emotional support that the first opinion was the correct opinion, and that getting treatment as soon as possible is more critical than trying to worry about going from doctor to doctor, as is prevalent sometimes. So just wanted to add that. थैंक यू। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में रिलैप्स के क्या चांसेस होते हैं या फिर क्या सिनेरियो होता है रिलैप्स का? ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर में रिलैप्स स्टेज वाइज होता है। जैसे कि ब्रॉडली अपने कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे रिलैप्स के चांसेस बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर फर्स्ट स्टेज में है और बाकी सारे फैक्टर्स फेवरेबल है तो बहुत कम चांस होता है रिलैप्स का। उससे जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि 5 इयर्स में तो अगर स्टेज 1 है और सब फैक्टर्स फेवरेबल है तो ऑलमोस्ट 100% क्योर रेट है। तो हार्डली एनी पेशेंट विल रिलैप्स इन द फर्स्ट स्टेज। But as we go further and second stage, third stage, the chances of relapse increases. इसके लिए सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का रेगुलर फॉलोअप रहता है। ब्रेस्ट कैंसर जो भी ट्रीटेड पेशेंट्स है उनका फर्स्ट ईयर में मंथली फॉलोअप होता है। फिर एवरी ईयर उनके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ऑपोजिट ब्रेस्ट का मैमोग्राम होता है, स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन होता है, पेट स्कैन होता है टू डिटेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न्स और मेटास्टेसिस। तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं स्क्रीनिंग इंटरवल बढ़ा देते हैं। सेकेंड ईयर में 3 मंथली फॉलोअप करते हैं, थर्ड ईयर में 6 मंथली करते हैं एंड देन वंस अ ईयर। और ये इन्वेस्टिगेशंस 5 इयर्स तक जनरली करते हैं। अगर 5 उसको कैंसर रिकरेंस या वो होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके। Okay, और I एक would love to go ahead, Shani. ब्रेस्ट कैंसर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर रिकवर हो गया है तो, या फिर क्या फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं? ओके, सो सबसे पहला इफेक्ट तो ये है कि भी एक बाजू ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दूसरे बाजू का रिस्क ज्यादा रहता है नॉर्मल से, ऑलमोस्ट ट्वाइस द रिस्क रहता है। क्योंकि बॉडी में जो भी फैक्टर्स है, जो भी रिस्क फैक्टर्स है वो दोनों ब्रेस्ट के लिए इक्वल होते हैं। तो एक बाजू के ब्रेस्ट में हो गया तो दूसरे बाजू के ब्रेस्ट में हो सकता है। उसके लिए सारे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस सब कुछ सेम रहेगी कि 6 to 12 मंथ की एग्जामिनेशन और मैमोग्राम करना ही चाहिए। दूसरी चीज थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद थोड़ा लिम्फेडिमा और थोड़ा वो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो या रेडिएशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, वो जनरली 6 to 12 मंथ्स में सब चले जाते हैं। Most of the patients after a period of 6 to 12 months usually lead a normal lifestyle without much changes in their life. Okay, thank you so much. And a follow-up question to that is, some people have opted to avoid getting chemotherapy treatment due to the belief that it may recur, it may bring the recurrence of breast cancer, and they have opted to go for surgery or mastectomy. What are your views on that,
on that on the doubt that people have about chemotherapy. Okay. So chemotherapy is never a substitute for surgery. Finally, the treatment which is going to cure the patient is surgery. The timing of the surgery may differ. The surgery may be either after the chemotherapy or before the chemotherapy. And chemotherapy, the logic behind avoiding chemotherapy by patients is actually completely opposite to what the fact is. The purpose of chemotherapy is actually to decrease recurrence, to decrease metastasis in the future. The surgery is going to take care of the local issue which is there. The local problem which is there in the breast is going to be taken care of by the surgery. Chemotherapy is more of a systemic effect of the disease. That is the effect which the breast cancer cells might be there in the blood, it might be there in the other organs, which will be taken care of by the chemotherapy. So the purpose is that. So, anyways, a combination of these treatments is there for all patients, and the results which I have mentioned will only be there when the entire treatment is taken in the combinations which are advised as per the stage of the disease. Okay, thank you for explaining that. Final question I have is that have you or other oncologists recommended preventive mastectomies in high risk cases, as Yes, that has been done here in some cases in the USA? yes. So, definitely, prophylactic mastectomy is one of the risk reducing strategies for those patients who have uh, genetic mutation positive and who are at risk for developing breast cancer. So prophylactic surgeries for breast cancer are in two groups. One is prophylactic mastectomy, as you suggested. Another is prophylactic risk reducing salpingo-oophorectomy. So as I said in my presentation that breast cancer is a hormone dependent cancer. Most of the breast cancer risks are due to estrogen in the body. So there is a case for after the female's family is complete and the reproduction part is over, there is a component for a risk reducing oophorectomy, salpingo-oophorectomy, along with a prophylactic mastectomy, which will decrease the risk in such patients who have a strong genetic mutation linked to breast cancer. Okay, thank you for that answer. There's a viewer question. Charmi, if you want to present that. Yeah. So Bhavya has questioned that what are the chances of breast cancer in male? The chances of breast cancer in male are 100 times less than that in a female, but male breast cancer does occur. If we see the incidence in females is like 1 in 28 females, so the incidence in males would be around 1 in 3,000 or 4,000 cases. The fat tissue which is there in females is also there in males, only the quantity and amount is less, and they can develop male breast cancer. So and the screening recommendations for them would be in those who have a family history positive. Okay. Okay. So thank you. I don't see any other questions. If you would like to say your thanks, Charmi. Yeah. Sure. So thank you so much, Dr. Misha, for taking out time from your busy schedule and helping us spread awareness about breast cancer. A special thanks to Mr. Vivek Joshi and Mrs. Dharmista Van Chaudhary and RNG Patel Institute of Technology for helping us with our streaming backend handling. And thank you so much, participants and viewers, for joining and sharing your comments. ये फेसबुक लाइव हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल रहेगा, सो लेटर ऑन आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लिंक वेबसाइट की डोनेशन लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Thank you, Dr. Michelle, Vivek Bhai, Dharmista Ben, Charmi. Thank you, everybody. Please be aware of breast cancer. This is October. And if you need any help, please contact us at RFC or PJMF. Thank you, Namaskar. everybody. Okay. Professor Thank you. Dharmista, can you please share the link in the comment section? Just wait.